Good morning everyone and welcome to the class. We are doing first chapter in the first book. The chapter is Constitution, Why and How, and we are discussing Constitution why. And why do we need a constitution? We need a constitution because a constitution does so many functions. Like we have seen that the first most important function of the constitution is to provide a set of basic rules, and the rules which allow for minimal coordination among the members of a society. The second function of this constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted, what the powers of the government will be. All these things are mentioned in the constitution. And the third important function of the constitution is to set some limits on the powers of the government, so that the government should never trespass them. And we have seen that fundamental rights is one of such provision of the constitution which put limits on the powers of the government. And now we are discussing the fourth function of the constitution, that is aspirations and goals of a society. Aspirations and goals of society. Okay, so as we have discussed in the previous class that 20th century constitution, in most of the constitution which are framed in 20th century, like our constitution, provide an enabling framework for the government to do certain positive things so that the aspirations and the goals of society can be achieved. As we have seen, we have discussed that deep entrenched inequality was existing in our society when the constitution was in the process of making. The discrimination on the basis of caste, the discrimination on the basis of gender was existing very badly in our society. And we know that by the provisions of the constitution, equality was established in our country. So India aspires to be a society that is free of caste discrimination. This is the aspiration of the people of India, that there should not be any kind of discrimination on the basis of caste. So this is the aspiration of our society, and the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. So how this caste discrimination will be eradicated? So in order to eradicate, in order to end this caste discrimination, what is important, that the government should take some necessary steps, and the constitution gives this power to the government to take necessary steps to end the caste discrimination. लाइक साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री को हम सभी जानते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर था, एपार्थाइड लॉज थे, और जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वहाँ पे, जब 1994 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है, तो उसमें गवर्नमेंट को इस बात के लिए पावर दिया गया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड कर दे. Its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. So this is the function of the constitution, that it fulfills the aspirations of the people, it fulfills the goals of the society. And the framers of our constitution
thought that each individual in our country should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. है ना? Every individual must have must have minimum dignity, must have social self-respect, है ना? मस्ट हैव मिनिमम मटीरियल वेलबींग, जो भी हमें अपने वेलबींग के लिए जो मटीरियल चाहिए, लाइक फूड है, क्लोथ है, हाउस है, एजुकेशन है, ये सब कुछ उनको अवेलेबल कराया जाए. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, है ना? पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स मतलब द वेलफेयर मेजर्स विच आर एम्ड एट improving the condition of a particular group of society, है ना? And these positive welfare measures are legally enforceable. And when you will study this Indian Constitution, you will find that such enabling provisions have the support of the preamble of our Constitution also. And these provisions are found in the section on fundamental rights. Okay, so directive principle of state policy is also there, which enables the government to fulfill certain aspirations of the people. So this is the function of a constitution, to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create conditions for a just society, है ना? The aim is to fulfill the aspiration of the society. And how this aim can be achieved? This aim can be achieved when the government takes some decisions to fulfill these goals. And how the government will take decision? Because the constitution has given government this power to take decisions. Okay, so this is about this aspiration and goals of the society. And now we come to the next function of the constitution, that is fundamental identity of people. So this is one of the most important function of the constitution, that it expresses the fundamental identity of a people. It means that the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. We are one, not because we speak the same language, we have the same, we all practice same religion, we all belongs to same cultural group or anything like that. This is not our identity, because in our country the culture is different, the religion is different. So it is the constitution, because the constitution is a basic set of rules, है ना, about how one should be governed, and all the people have agreed upon some basic set of rules. That basic set of rules is known as constitution. So this gives us a collective identity. Okay. We all have something in common. The provisions of the constitution give us this identity, this collective identity. Like a person has many identities, है ना, many set of identities. Like अगर religious purpose से देखें तो हम एक हिंदू हैं, जेंडर पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम एक फीमेल हैं, प्रोफेशन के हिसाब से हम एक टीचर हैं, रिलेशन के हिसाब से हम एक मदर हैं, डॉटर हैं, है ना. तो ऐसे एक इंसान की कई पहचान होती है, लेकिन जो एक कलेक्टिव पहचान की यहाँ बात हो रही है, जिससे कि हम सब में जो कॉमन आइडेंटिटी है, जिससे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं, दैट गिव्स अस अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ आवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना.
and we see that constitutional norms are the arching framework within which one pursue individual aspirations, goals and freedom, है ना. जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे एस्पिरेशंस है अपनी लाइफ के लिए, जो गोल्स हैं, जो फ्रीडम है, उसको हम परसू करते हैं, उसको हम उसके पीछे हम भागते हैं, है ना. तो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं वो उनके अंदर रहते हुए हम अपने पर्सनल गोल्स को, एस्पिरेशंस को अचीव करना चाहते हैं, है ना. तो ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट्स पुट करती है. इट पुट्स कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू, है ना. क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता दिया है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, और हम सब उसको अवॉइड करेंगे, हम सब उसको मानेंगे. नहीं मानेंगे तो हम वी विल बी पनिश्ड. तो दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ मॉरल आइडेंटिटी एज वेल. सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, political identity and moral identity. And other than this, the constitution also gives us in different constitution these political and moral values are shared. They all share this political and moral values, but here we should also try to understand that most of the modern constitutions create a form of a government that is democratic in some respect, है ना. Most of the democratic constitution of modern time claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody conception of national identity. नेशन की आइडेंटिटी को वो जिस तरह से दिखाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट. सभी डेमोक्रेटिक है, सबके कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, बट जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो नेशनल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से शो करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट. जैसे बहुत सारे नेशंस जो हैं उस वहाँ हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं उन सब को लेकर वो चलते हैं, है ना. दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप दैट रिसाइड विद इन नेशन इन डिफरेंट वेज. जो उसके कंट्री में डिफरेंट ग्रुप्स जो रह रहे हैं उन सब को वो किसी न किसी तरह से लेकर चलते. जैसे अगर हम जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जर्मन आइडेंटिटी को देखें, तो उसी को जर्मन माना जाता है जो एथनिकली, है ना, एथनिक जर्मन है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस आइडेंटिटी को वो एक्सप्रेशन देता है. कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कहता है कि यस, हमारे लिए जर्मन आइडेंटिटी जो है वो एथनिकली जर्मन जो होंगे उसी को हम जर्मन मानेंगे. ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. बट अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एथनिक आइडेंटिटी को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह. हमारे यहाँ एथनिक आइडेंटिटी इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप, है ना. डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शन. हर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस मामले में डिफरेंट कॉन्सेप्शन को फॉलो करता है कि कैसा रिलेशनशिप होगा बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ collective identity. Okay, so these are the functions of the constitution we have discussed, and now we come to the next part of this chapter, and that is the authority of a constitution.
the authority of the constitution. So functions are now we are knowing what is the need of the constitution, and that is the reason most societies have a constitution. We cannot work without constitution. But now we have some other question about the constitution. Like the first question is what is constitution, about which we have discussed in the starting. Then the next question is very important: how effective is a constitution? And the third is a constitution just? So now first of all we will consider what is a constitution. So we see that in most countries constitution is a compact document. compact document मतलब एक जगह पर जो सारे documents जमा किए हुए हैं in the form of a book. And this compact document comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted, what norms it should follow, and everything. है ना? And when we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. है ना? यही document जो है वो constitution कहलाता है. But in some countries, as we have discussed earlier also, like United Kingdom, do not have one single document that can be called the constitution. In that country, the constitution is not in the form of a book. Okay, they have a series of documents and decisions that collectively we can refer it as the constitution. है ना? बहुत सारे documents हैं, decisions हैं जिनको कि हम collectively constitution कह सकते हैं. फिर as I told you, वहाँ पर कुछ conventions भी हैं, है ना? untold, unwritten, जो लिखा हुआ नहीं है but वो ऐसे ही होता है, वो rule बन गया है ना? So we can say that the constitution is the document or a set of documents that seek to perform the function that we mentioned above. है ना? जो हम ये जरूरी नहीं है कि वो written ही हो, compact हो, compiled हो एक book के form में. It's not necessary. What is a constitution? That it's a set of rules in which it is specified that how the state will be constituted, what norms it should follow, what will be the functions of the what will the functions of this government, what will be the powers of the government, how the government will be formed, what will be the limitations on the powers of the government, and what will be how the constitution enables the government to fulfill the aspirations of the society. So these are these set of documents is known as constitution. Okay, and what we see that many constitutions around the world exist only on paper, है ना? Because what we find that many times provisions are there in the constitution but they are not effective in reality, they are not implemented in reality. So what is important that how the constitution becomes effective. कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव कहने का मतलब उसको माना जा रहा है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली रियल में काम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ना? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how effective is a constitution. So there are many factors which make a constitution effective or ineffective. So first of all we will discuss the
factors which make a constitution effective or ineffective. The first factor is mode of promulgation. From where comes authority to the constitution? Authority कैसे मिलती है constitution को, कैसे वो effective बनता है ना? So the first is factors responsible for effectivity factors responsible for the effectivity of the constitution. And the first is mode of promulgation. What does it mean? Mode of promulgation से हम क्या मीन करते हैं? इसका ये मतलब होता है how a constitution comes into being. कैसे constitution बना? Who crafted the constitution? And the people or the persons or the group of people who crafted the constitution, they have how much authority? है ना? So what we find that in many countries the constitution remains ineffective. The constitution remains defunct. Defunct मतलब non-functional, काम नहीं करता. It is only on paper. It is not actually functioning. Why? Because they are crafted by like some military leaders or leaders who are not popular or who do not have the ability to carry the people with them. So the constitution becomes defunct only because of this is one of the most important reasons. The people who crafted it. If such people who are not having popular support craft the constitution, then it does not get support from the people. And what we find that the most successful constitutions, like the Constitution of India, which comes under as one of the most successful constitution of the world, then the Constitution of South Africa, Constitution of United States, these are the constitutions which were crafted after the popular national movement. In our country we have national movement, and through this national movement we were able to remove the British government from the power, and then we achieved our independence, and then this constitution was written down. In the similar way, in South Africa also national movement was there in the leadership of Nelson Mandela, and it was only because of this national movement that the country achieved freedom and new constitution was crafted. The same was the condition of United States of America. It fought American War of Independence, and then it got independence, and then it framed a constitution. So we see that if we see the case of India's constitution, it was created by a Constituent Assembly, and the period was between December 1946 to November 1949, है ना? जो constitution का हमारा frame हुआ था, that was from December 1946 to November 1949, है ना? और इसमें
जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उस नेशनलिस्ट मूवमेंट में ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रोविजंस थे उसके लिए एक जो कहा जाए कि बन चुका था कि क्या हम चाहते हैं, व्हाट इज़ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, इट वाज नोन थ्रू द नेशनल मूवमेंट, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना तो बहुत सारी चीज़ें नेशनल मूवमेंट के दौरान ही चीज़ें तय हो गई थी कि जो लोग हैं उनको किस तरह से पावर्स, फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, सबके पास फ्रीडम होगी। तो ये चीज़ें ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई थी, है ना। एंड वी सी दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय those people who have immense public support, who have immense public credibility, लोगों की उनको सपोर्ट था, ऐसे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जिनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो पूरे, मतलब ऐसी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिस्पेक्ट उनको मिलता था, बल्कि हर ग्रुप, कंट्री में रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो सभी उनको रिस्पेक्ट देते थे, है ना। सो दिस वाज देयर, द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। उस समय जो नेशनल कंसेंसस था कि सारे लोगों को एक चीज़ था जिस पे सभी लोग उनके बीच में सहमति थी, है ना। तो जो भी लीडर्स जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट किया उनको जनता का सपोर्ट था। क्यों जनता का सपोर्ट था? क्योंकि वो लीडर्स थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में लीड किया, हु वर द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो लोगों का सपोर्ट तो उनको मिलना ही था, है ना। And sometimes we see that some countries, what they do, that they subject their constitution to a full-fledged referendum. What do we mean by referendum? रेफरेंडम से हम क्या मीन करते हैं? रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि लोगों का उस पर वोट लिया जाता है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो वोट के थ्रू वो बताएंगे कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं। तो अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा रेफरेंडम नहीं हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको रेफरेंडम के लिए भेजा गया जहाँ पर लोगों से की रजामंदी ली गई। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पब्लिक सपोर्ट रहे, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक सपोर्ट इट विल नॉट बी possible to make the provisions of the constitution functional. So if we want that the constitution should be functional, what is important that it must have the support of the people, and for that purpose referendum is done in some countries, but in our country that kind of referendum was not done. Still we find that our constitution has the support of people. Why? Because of the leaders who crafted the constitution. The leaders who crafted the constitution, they had the support of the people, they had so much respect in the eyes of the people, and this is the reason. If we see the case of Nepal, what we find that in Nepal many times constitutions were made. Like if we see since 1949, Nepal has had 5 constitutions. First of all in 1948, then in 1951, then in 1959, again in 1962, and then again in 1990. But that is also not the end. Again in 2015 the Nepal had a new constitution. So why so many constitutions are there in Nepal? क्यों constitution बार बार बन रहे हैं नेपाल में? एक बार बना हुआ constitution long lived नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसमें उसको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे जो रीज़न है वो हम यही कहेंगे कि जो सारे जो constitution है they were not crafted by the popular leaders. Actually they were granted by the king of Nepal. So this term is very important to understand. Granted.
The king has granted this constitution. King ने दे दिया ये constitution आपको. The king is not going to take your opinion. Your opinion is not important for the king. He has made some rules and granted it to the people, and that is the reason Nepal is having so many constitutions. Okay, so this is all for today. We will continue with this discussion in the next class.